एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है. Last thing we have seen was atomic mass unit. Mm, I'm going to start from this isotopic and average atomic weight today. स्क्रीन ही दिखा. स्क्रीन नहीं दिख रहा है. सॉरी. एवरेज atomic weight, ठीक है. Average atomic weight basically every element has various isotopic forms, ठीक है. Some of them has singular isotopic, stable isotopic form, but there are many elements which has multiple stable isotopic forms, or stable isotopic forms. Yeah. So many elements, or some of the elements, whatever you want to use, there are many elements have multiple stable isotopes. Therefore, the atomic mass of such therefore the atomic mass of such elements is taken as weighted mean of atomic mass of stable isotope. यहाँ पर स्टेबल का मतलब ये होता है कि नॉन स्टेबल का मतलब होता है ऐसे एटम्स या ऐसे स्पीसीज जिनका डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है, जनरली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स रहते हैं, डिसइंटीग्रेशन टाइम बहुत छोटा ना हो, ठीक है, यानी हाफ लाइफ बहुत छोटा है, देन ओनली इट इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज अनस्टेबल. अदरवाइज अगर बड़ा हाफ लाइफ टाइम है, जैसे कार्बन 14 हो गया, तो then they are going to be considered as fairly stable, and उनको हम stable isotope के अंदर काउंट करते हैं, and we are going to use their masses also, ठीक है, in order to calculate average atomic mass. Making sense? Weighted mean का मतलब क्या होता है? Suppose an element A has 3 isotopes in which the atomic mass is A1, A2 and A3, and possibly their either percentage, इसमें मोल फ्रैक्शन तो डिफाइन कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग स्पीसीज नहीं है इसलिए मोल फ्रैक्शन नहीं डिफाइन कर सकते हैं. द ओनली वे आउट इज परसेंटेज कंपोजिशन. सो परसेंटेज कंपोजिशन इसका मान लो परसेंटेज कंपोजिशन इज सपोज N1% है, दूसरा वाला N2% है और तीसरा वाला
N3%। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? इट विल बी A1 N1 plus A2 N2 plus A3 N3 बाई, तीन ही है तो ये तीनों का सम डेफिनेटली 100 होएगा। ठीक है, N1 plus N2 plus N3 एंड ये तीनों का सम डेफिनेटली 100 रहेगा। ठीक है, अगर तीन ही आइसोटोप्स है तो ये जितने भी होंगे सबका सम 100 होएगा, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देंगे। दैट इज गोइंग टू बी माय एवरेज एटॉमिक मास। इज दैट ओके? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, लगभग सारे जिन भी एलिमेंट्स के फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस हैं, उसके पीछे एक मेजर रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्टेबल आइसोटोप। दैट्स वन रीजन। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है? ठीक है, द masses of proton, electron and neutron, they themselves are fractional in nature. ठीक है, they are not perfect 1 AMU each. एटलीस्ट इसका तो नहीं है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का तो नहीं है। ठीक है, वो तो हमेशा फ्रैक्शनल ही रहेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, आई थिंक इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं ज्यादा रहनी चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग बोरॉन वगैरह पे। अगर एवरेज एटॉमिक वेट उसका 10.6 है एंड इट्स अ मिक्सचर ऑफ B9 एंड B11। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट। ठीक है, B9 and B11 और average atomic mass is 10.6 m, then percentage of isotope। ठीक है, या फिर सिमिलरली क्लोरीन जो होता है 35 होता है, क्लोरीन 37। ठीक है, इन दोनों से हमारा एवरेज एटॉमिक वेट जो मिलता है क्लोरीन का, एवरेज एटॉमिक मास दैट इज 35.5। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप क्या होएगा? ईच आइसोटोप calculated Yes, sir. First में B9 का 20% और B9 20% और B11 80%। दूसरे वाले में
क्लोरीन के केस में क्या परसेंटेज रहेगा? Cl35 का 75% और 37 का 25%. इसका 25% और ये 75%. ठीक है. आसना, Yes, sir. are you getting these answers? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है. And then we will move on to the next thing, that is molecular weights. और बेसिक मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन मुझे लगता है कि सिखाने की जरूरत नहीं है, guys must be knowing, so I'm not looking at that. और उसमें से दो चीजें मैं, परसेंटेज और वेट एक्सप्रेशन कैसे होता है, एंड परसेंटेज वेट एक्सप्रेशन ही, एंड percentage moles expression या number count expression. So molecular weights or molecular masses, mass, this is nothing but mass of all atoms present in a molecule percentage mass of mass of an element in a molecule will be mass of all the atoms of that element number molecule divided by total mass of the molecule into 100. ये यूज करते हैं हम लोग प्राइमरली परसेंटेज या एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन के टाइम पे. परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट और percentage of atoms present will be total number of atoms, percentage of atoms of an element in a molecule number of atoms of an element molecule divided by total atoms in the molecule multiplied by 100. ठीक है. So these are just informative things. Important thing is there is something called as
average molecular mass, percentage dissociation or association, and average molecular mass. Percentage dissociation or association. इसके साथ साथ एक दूसरी चीज होती है दैट इज कॉल्ड degree of dissociation or association alpha. Now, percentage dissociation or association is equal to 100 into alpha. Alpha is defined as alpha is equal to moles of number of moles or moles that got dissociated. Number of moles of a molecule molecule that got dissociated divided by dissociated or associated divided by total number of moles of the molecule present. Or that is how the alpha is defined. Based on the value of alpha, we have something called as average molecular weight. Average molecular weight by definition it happens to be, suppose I have possibly a compound AN which is dissociating into Na. All of them are fragmenting. The molecule is entirely fragmenting into atoms. Suppose initially I have taken E, this will be 0. Uh, if alpha is my DOD, degree of dissociation is equal to alpha, then number of molecules which would have got dissociated will become A alpha theta, and the molecules formed will be Na alpha. Net remaining will be A minus A alpha N type, and Na type will be Na alpha, and therefore total moles will be A plus N minus 1 A alpha, or A into 1 plus N minus 1
alpha. Is that okay? If the molecular weight of AN is molecular weight of AN is equal to capital M. Yeah. So average molecular weight can be I mean, it's actually defined as total weight upon total number of moles. As usual, हर जगह पर ऐसे ही हमारा एवरेज डिफाइंड होता है टोटल काउंट और वेटेड काउंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एंटिटीज. ठीक है. सो यहाँ पर भी सिमिलरली basically during the reaction weight of the substance does not change, right? We know this fact. Mass is conserved during chemical reactions. तो इनिशियली हमने कितना वेट लिया हुआ है A into M, right? Molecular weight of AN is M. और A moles अगर मैंने ले रखा है इनिशियली तो इनिशियल वेट कितना हुआ M into small a. Is that okay? So MA and the total number of moles is A into 1 plus N minus 1 alpha. A will get cancelled. Average molecular weight will happen to be write it as M average is equal to M upon 1 plus N minus 1 alpha. ठीक है. M average को जनरली हम लोग M actual, ठीक है, या फिर M एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं. एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, या फिर M ऑब्जर्व भी बोलते हैं. ऑब्जर्व्ड. इज दैट ओके? दीज ऑल आर सेम. ठीक है. ये जो M है, ये M जो है इसको बोलते हैं हम लोग M थ्योरेटिकल. मॉलिक्यूलर वेट थियोरेटिकल. ठीक है. Is this definition clear? Yes, sir. Okay. Then we have एसोसिएशन के बाद नोट कर लिया था हम लोगों ने. हाँ सर. आस्था आपने. Yes, sir. नेक्स्ट वन इज association. This is going to be Na making An. A का इनिशियली A मोल्स दिया मैं
association, degree of association is equal to alpha. That means A alpha has got reduced. How many will get produced? A alpha by n, as n moles are going to produce 1 mole, therefore A alpha mole will produce n by n moles. Net outcome will be इस टाइप के मॉलिक्यूल्स और मोल्स will be A minus A alpha. इस टाइप के moles will be A alpha by n. Therefore total moles will be A minus A alpha plus A alpha by n, or A into 1 minus alpha plus alpha by n, or A into 1 plus 1 by n minus 1 alpha. या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं. I mean, I can also write it as 1 minus 1 by n alpha. यहाँ पर भी same logic, average molecular weight will be total weight upon total moles. A moles है और A का molecular weight m है. A का molecular weight of A is equal to m. Total weight at the beginning of reaction is equal to Ma. Total moles is equal to 1 plus 1 minus 1 minus 1 minus 1 by n alpha. A cancel. Average molecular weight will become m theoretical divided by 1 minus 1 minus 1 by n alpha. ठीक है. This is m average or m experimental or m observed. ठीक है. We can attempt a small question on this. 2 questions. In 205, dissociates as L02 and
Can we calculate this? Nitrogen oxygen के atomic weight are going to be N is equal to 14 and O is equal to 16. ठीक है, क्योंकि हमने जो यहाँ पर कैलकुलेशंस किए हैं वो पर मोल के हिसाब से किया है। 1 mole of this is getting into n mole of this. ठीक है, where n can be a fraction also, there is no issue in that, but and similarly यहाँ पर भी यहाँ पर भी हमने वही चीज किया है, n moles where n can be fraction or any rational number and it is getting converted to 1. Is that okay? Yes, sir. तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन के टाइम में बैलेंस्ड इक्वेशन चाहे जो भी दिया हुआ रहेगा, विल ट्राई टू डिसोसिएशन वाले केस में इसमें विल ट्राई टू मेक द रिएक्टेंट वन मोल एंड प्रोडक्ट कितने फॉर्म हो रहे हैं वो काउंट करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, और एसोसिएशन वाले केस में प्रोडक्ट वन मोल एंड रिएक्टेंट कितने मोल्स हो रहे हैं वो ऐड करके हम लोग निकाल लेंगे। Is that okay? Yes, sir. Asna,
Yes, Ask. You got this question, these questions? सॉल्व कैसे करना है समझ में आया? yes, sir. अभी सॉल्व कर लेगी एक बार and can try if you are getting these answers or not. मैंने सॉल्यूशन अभी तक भी नहीं लिखा है प्रॉपर्ली, ठीक है? therefore I'm asking कि एक बार सॉल्व कर लो अभी भी, if you understood it, नहीं तो फिर सॉल्यूशन लिखूंगा मैं. Then generally we are given information in terms of percentage weight of elements, ठीक है? Suppose there are three elements A, B and C. इनका परसेंटेज कुछ भी रह सकता है, वॉट एवर इट माइट बी, या फिर एक प्रॉपर क्वेश्चन लेकर के वी कैन सॉल्व इट एंड यू गाइस कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट. Let me pick a question.